Arvind, Sanjay, oh my God, so many of them. Suyash, Rishabh, Anjali, wonderful to see all of you this very morning. Some of you who log in late, and I would say that don't miss out on the meditation, the relaxation, the initial part of Happy Minds. Don't miss out on that. Namaste Savita, Raviraj, Yogesh, Kuja, Hemant, Kailash, Sachin, Mangal, dedicated person Mangal from US, Mansoor, welcome to Happy Minds. And all those who have joined in for the first time, welcome to Happy Minds. One more time, welcome to all of you who have joined in for the first time. Agar aapne pehli baar join kiya aaj, you can just write in first and the city you're from, so I'll come to know aap kaun se shehar se hain and where all we have been able to reach. So many of HM attendees, so many Chrysalians have been sending the connect of Happy Minds to their friends, their relatives across the country and even abroad. And we have got some बहुत अच्छे लोग बहुत जगह से जुड़े हैं हमारे साथ. And so if you're from attending for the first time, आप पहली बार आए हो आज HM में, just you can type in the first, you can write in first and the city you're from. So we have Ravi Raj joining in from Navi Mumbai. Welcome, Ravi. And do keep on spreading the word for Happy Minds. जो लोग नए हैं, जो पहली बार आए हैं, I just want to share this with you that Happy Minds का ये 1120th session hai, and for last 25 years we have been doing it, and it's very encouraging that we have people connecting from all parts of the country and abroad. And every week I have some sharing to do. I have some insights to share with everybody. But before that, we start with meditation. Meditation ke baad we have a round of success stories. I have quite a few success stories today. Because last week I could not share, so we have quite a few success stories. And after the success story, I share the subject or the concept for the day. So that's how the entire activity is when it comes to Happy Minds. मेरा आपसे फिर request रहेगा सब लोगों से that do log in at 7. Don't even a few minutes late here and there. There is a non-alignment because the session has already started, the meditation has already started, you're logging in between, तो आप उस process का भी आप आनंद नहीं ले पाते हो. And it's a matter of few minutes, and I think a few minutes should not be something which is not in your control. अगर आदमी को आधा घंटा लेट होता है, 1 घंटा लेट होता है, तो समझता है कि हाँ भाई कुछ challenge रहा होगा. But a few minutes late is nothing else but a sign of carelessness. कभी भी आप याद रखो, आप अगर कुछ मिनट लेट होते हो, so it is always because of carelessness. It is, and that can be taken care of by being careful. Which major challenge hota hai life mein, then you have some major time gap which is there. But a few minutes I feel kahin na kahin planning mein aapne ढीलापन किया, kahin na kahin aapne lightly liya चीजों को, and that's why you are late by a few minutes. चलिए आज की success stories को share करते हैं. I have quite a few success stories, बहुत cut down karna pada, and I have a few 3-4 stories are there. One is of Chrysalian Nilesh Talavre, and he completed the Ironman in Goa last Sunday, and he messaged me. He says, "Sir, you are the inspiration behind this achievement of mine, because this is not the first time he has done Ironman. He has done it in the past also. But I remember him when I met him for the first time, I think almost 10 years ago, when he came for my program, and he was a part of my business program. So look, normally क्या होता है ना, business program करने आते हैं, and whenever I get a success story, तो मुझे उनका background, उनका past, उनका association याद आता है, because they have been there with me for years. And I remember Nilesh, when he had come to me, so he had come for a business program. Now, business program में क्या होता है, they expect कि आप business की बातें करें, they expect that you help them guide, or you guide them in their business and take them to the next orbit. But I give what I am. So along with business, I somewhere मैं कहीं ना कहीं जो है ना नोक झोंक करते रहता हूँ कि लाइफ में ऐसा जियो, फिजिकली फिटनेस में ये ध्यान दो, रिलेशनशिप में ध्यान दो. So that's what I am, and I can't stop it. I can't help it. So somewhere in the process of staying with me some years, he felt the urgency, the need to take care of his health. And
he lost a lot of weight and he started jogging. He started taking part in marathons, and he's absolutely transformed person compared to what he was 8-10 years ago. So congratulations, Nilesh, and I'm sure you will be a source of inspiration to many at that age, which we all are in, doing something so demanding in terms of an Ironman is awesome. And this is one lovely success story which I would love to share, and it's a very cute and a very बोलते ना कि बहुत दिल के करीब. So I got a call one day, and somewhere it was in the evening, and the caller was one of my students, Priya, and she says, "Sir, a great news." And उसकी आवाज में बड़ी excitement थी. I said, "Tell me, Priya." She says, "I have become the vice president of the BJP Yuva Morcha Maharashtra." Wow, this is ये कहाँ से आया? And we have had, and then she says, "आपको याद है हम कितने discussions करते थे?" And since I would have this flavor towards Modi ji, and she would listen, and she would keep on thinking that why he's such a fan of Modi ji. And she says, when I was conferred and when I was made the vice president of the Yuva Morcha Maharashtra, the first person who came to my mind was you. और मैं जैसी निकली बाहर मैंने आपको फोन करने का सोचा, and just to share with you this great news. And I've been given the responsibility of the women empowerment in Maharashtra and Atmanirbhar Bharat ke initiatives पर मेरी जिम्मेदारी है. And but more than anything else, I felt awesome about, because I've seen Priya the last. Again, these are people who have been with me for years. And she says, "I've been with you, and I know the kind of whatever I've been able to achieve. इनकी बड़प्पन है कि that they attribute a lot of that to me, and whatever insights they picked up from me." So this was another success story which is there. And I did meet her in my training program last week when I was training Repos, and there she was, and she just came back from Nagpur after the entire activity, and very excited about taking up the initiatives across Maharashtra. I feel that politics में अगर अच्छे लोग जाते हैं ना, who have a very clear intent, who have a lot of energy with them, who have purity with them, I think a lot of work can happen, because these are leadership positions. These are positions through which a lot of public work can happen. A lot of great work can happen. So one more time. Another success story is from, it's not a success story, but it's a lovely sharing, which I thought, let me share with all of you. So I get this message that when can we talk? And this is from Vishali Sharma. She says, "When can we talk?" I said, "Haan, bolo. I happen to be free in the evening." And then she called and she says, "I took a session for my team, and they were newly joined team members, and I took a entire one-day session for them as to what my company Nirav Biosolution is all about." And then she says, from there I went into making them understand what we stand for, our value systems, and why we are doing what we are doing. And she says, I went on talking about it. And in the audience was my father. He was there in town, and he thought of visiting us. And there, when I was taking the session, he sat there. And she says, the reason I called you was because session jab khatam hua, jab mera training khatam hua, mera inputs khatam hue, to my father, with all the experience he has got, and I have learned a lot from my father. She says, my father came and he says that this is so very wonderful that I see organizations focusing on values जो हम लोगों ने भी कभी सोचा नहीं कि ये चीज कितनी जरूरी है team members को बांटना. And she says, coming it from my father, I felt, wow, I'm absolutely on the right path. And it was nice that she shared this with me. There's so much which she spoke about as to how this thing went on, but I thought, let me share this with you, because if you're an entrepreneur or if you're a leader or अपनी organization को आप run कर रहे हो, it's very important that you align your team. Align your team with who you are. Align your team with what you stand for, and with the expectation that the more they are aligned with who you are, the more they would walk on the path which has been decided by you. That's the power of alignment. जब उनको मालूम पड़ता है आप ऐसे हो, उनको मालूम पड़ता है कि आप ऐसे इस तरीके से काम कर रहे हो, so they will also be in a position to pick that up. आप उनको अलाइन ही नहीं करते हो और फिर एक्सपेक्टेशन रखोगे कि वो आपके फुटस्टेप्स चलेंगे या आपके वैल्यू सिस्टम को फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं होता. So take an effort to align your team with who you are. The next sharing is from another Christian, Vishwas Joklekar, and he says, sir, मेरी कल ही बात हुई, and he says, sir, we are flooded with orders, and
बड़े आश्चर्य की बात है कि now since we are flooded with orders, we are doing awesome work. हमारे principals जो इटली में है, they are unable to service us, and they have this inability to give us the products. And I said, wow, this is something awesome, because you have somewhere, outrun your principals. Normally क्या होता है, principals they push the entrepreneurs की चलो भाई माल ले लो, push the business ahead. He says हम यहाँ business ला रहे हैं और वो हमें service नहीं कर पा रहे हैं. And this is a lovely bottleneck. I wish many have this bottleneck, that you're ahead of your principles. Another success story is from Crisilin Marthu Shanbag. While having a discussion with him, he says, we are firing on all cylinders. We have 48 crores worth of orders lined up for us. The only challenge is we are going through a cash flow challenge, but rest everything is lined up. We are looking awesome for the next 6 months. And coming from entrepreneurs जो अपने area में दिग्गज हैं, that they have 6 months of order booking with them, it reflects a lot on the state of the Indian economy. कि हमारी economy जो है इतनी कमजोर नहीं है. The world is going through a different situation, but we as a country, as an economy, we are internally going on very strong. So very reassuring. From the field मुझे information आती है. This is not from the newspapers. This is not from some journalist जिसने कुछ लिखा हो, कहीं वो field में नहीं गया, उसने किसी से बात नहीं करी, उसने कहीं report पढ़ के वो अपनी अनुमान बना रहा है. I'm talking to you from talking, meeting, interacting with so many entrepreneurs, the real story down on the field. So I think from the entrepreneurship point of view, I think we have some good days ahead of us if we are able to produce and provide whatever we should. Another one is a success story where I was a part of a few days back. We were in a company called Orange Pet, and ये company is into pet food. And again, this story is one which I can relate with, क्योंकि मेरे सामने ये story शुरू हुई है कुछ सालों पहले. It's around 8-9 years ago. This story started where two partners, Ayaz and Bharat, both of my students, they came together and they started on this venture of filling the space of pet food. तो उन्होंने देखा कि pet food जो है, एक quality pet food जो है वो उसका एक gap area है Indian market में, and that's how they started off. And a few brands they brought from abroad, and from there to start to having their own brand. And Ayaz says, when he was sharing with us, all of us who were there, he shared that last 4 साल से, पिछले 4 साल से, they have been growing at a CAGR of 50%, and the industry CAGR is around 15 to 20%. तो industry grow कर रही है 15-20% से, ये grow कर रहे हैं 50% से. So somewhere they're eating into somebody's market, and that is what the speed one should have. तो मैं इसमें नोट लिख रहा था, मैंने कहा कि बहुत सारे entrepreneurs जो हैं, उनको अपनी इंडस्ट्री के बारे में मालूमात ही नहीं है कि उनकी इंडस्ट्री में हो क्या रहा है, उनकी इंडस्ट्री कहाँ जा रही है, उनकी इंडस्ट्री किस हिसाब से ग्रो कर रही है. एंड एज अ रिजल्ट, जब आपके पास ये क्लैरिटी नहीं होती अपनी इंडस्ट्री के बारे में, तो जाने अनजाने में जो है, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वेयर यू आर इन दैट एंटायर आपकी जो इंडस्ट्री है उसमें आप कहाँ पर, आपको समझता नहीं है. फिर आप जो स्ट्रैटेजीज बनाते हो वो अपनी समझ के हिसाब से बनाते हो, जबकि स्ट्रैटेजी बननी चाहिए फ्रॉम अ बिगर अंडरस्टैंडिंग. तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स अपने ही बिजनेस में इतने खोए होते हैं कि उनको बाहर की सुध नहीं होती. And here we have a company who knows everything about the industry and where the industry is moving and what are going to be the trends. And he says when COVID happened, pet sales across the country went up. So बहुत सारे लोगों ने dogs रखने चालू कर दिए या pets रखने चालू कर दिए. And he says because of that, we sense that this is happening, and we started catering to that future need which will be there. So उन्होंने अपने distributors बनाने चालू किए, outlets चालू किए, points of presence बढ़ाए, and he says we have been growing phenomenally. So ये एक सोच कि क्या हो रहा है मार्केट में, उसका हमारे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये समझ में आना चाहिए. So all the best to you, Ayaz and Bharat. Wish you that you reach your 3-figure mark, because they have a target of 100 CR this year. I'm sure they will cross that. Another set of entrepreneurs I met, Salil and Nitin, and lovely souls from Aurangabad. And this is a very beautiful, lovely story which I want to share with you. So they met me and they said, sir, we have developed a wonderful product.
and the product is a converter which can convert any waste into fuel. So मुझे लगा भाई I've heard about plastic being converted to fuel. तो मैंने उसको दोबारा पूछा, मैंने कहा what do you mean any waste? He says कहीं पर भी कोई waste होने दो, हमारी मशीन उस waste को फ्यूल में कन्वर्ट कर देगी. तो मैंने कहा उसके अंदर प्लास्टिक रहा, उसके अंदर कुछ वेट वेस्ट रहा, ड्राई वेस्ट रहा. He says let it be any waste, वो हमारी मशीन उसको कन्वर्ट करेगी. And they have got two parts of that invention. One is a picker which picks and sucks in that waste, and second is a converter for that which converts that into fuel. And he says the government has taken keen interest. They have ordered some 16 odd machines, and the order book is looking very good. And वो सुन के इतनी खुशी हुई कि not only it's a business, but it's going to solve one problem which the world is facing through the problem of waste which is being collected and which is being generated every day in tons and tons. तो उसको हैंडल करने के लिए कोई कंपनी तो काम कर रही है. So this is another lovely success story. And चलो बहुत हो गई. एक last वाली is from Sarvesh Kumar from Jhansi, and he says, sir, I've been working for the last 5 years. I've changed 3 jobs, and I always thought that I am not appreciated for my work which I give to my company. In one of the HMs, you shared that we are offering our services to the company, and we should see the company as a client of ours and then improve ourselves. Sir, from that day, I have brought this change in me, and now I see I can do a lot more in the company every day. And he says, I recently got the Star Performer Award for the last quarter. Thank you, sir. Areva, Sarvesh, and this is such a wonderful thing that you could pick up something from Happy Minds, और आपने उसको पिकअप करा और आपने उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया. So मैं बोलता तो बहुत कुछ हूँ HMs में, आपने सुना होगा, आप किताबें भी पढ़ते होगे. So it's not about reading or listening to somebody. It's all about implementing whatever you have picked up and whatever you have read. So Sarvesh picked up and he became a star performer. Great. So this is the success stories for today. Shali, can we get his address? You have to give me the reason why you would want his address and contact number, or you can find from net. I will not be able to, and I am not a directory. Okay, one more thing which is I just want to share with you. We have offline Happy Minds lined up for the month of January. So we have mega Happy Minds, the one which people wait for every year. So this year is happening on 8th of January, and it's going to be at Kalmadi School Auditorium in Pune. And you can register yourself. The link would be there in the chat box, because there will be a link aa jayega. You can register there. I look forward to this wonderful subject. Get the hell out of your way. And it's going to be a dhamakedar, jabardast, fire-packed Happy Minds on 8th of January. So be there and let your friends and relatives, and I don't know how many of you can be accommodated, but देखते हैं जितना hall में जा सकते हैं लोग उतने तो आएंगे, and look forward to it. So it's going to be a great time. And of course, tomorrow I'm having an offline meet with my life Chrysalians. So they're all excited. So many messages have already come in. So looking forward to tomorrow. And एक और offline meet कल सुबह की मेरी lined up है. चलिए. मेरे साथ हो कि नहीं, तुम मेरी बातें सुने जा रहे हो? हाँ? You're there with me or not? Okay. तो इतनी जिंदा है. I love this. जिंदा है. जिंदा हूँ मैं. This is, I love this part that when I say तुम लोग कहाँ हो, somebody says जिंदा हूँ मैं. तो stay alive and stay excited. अच्छा, ये जो मैंने इतनी सारी आपको सक्सेस स्टोरी सुनाई, what is your inference? आपके लिए इसका क्या मायने है? What have you picked up from what I shared? मैंने आपको 5-6 सक्सेस स्टोरी सुनाई, आपका इन्फ्रेंस क्या है इसका? चलिए, what does it mean to you? What does it mean to you? Implementation will be the key. Okay. What it has meant to, of all the stories जो आपने सुनी मेरे से, आपको कहाँ हिट हुआ?
यानी कि वेस्ट कन्वर्टर कंपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अच्छा ये मैं यार डायरेक्टरी नहीं हूँ। हाँ, तुम लोग मुझसे ना नंबर नंबर नहीं पूछा करो, अच्छे सवाल पूछा करो, फाइंड आउट ऑन योर ओन, पर मेहनत करो, निकालो नेट पे जाओ, आज सब अवेलेबल है। कोई मुझे उसके नंबर मांग रहा है, कोई मुझे उसके नंबर, मैं एचएम में ऐसे ही करा करूंगा, अभी डायरेक्टरी खोल के बैठूंगा, हाँ भाई नंबर ले लो, यही काम रह गया मेरा। Implementation with the don't be shy to take an initiative. Absolutely right, Mansoor. I should be inspired enough to make Mansoor. Oh, wonderful Kamlesh. बहुत जरूरी है. I want you all to become a success story, which I can share and which I should share. They inspire to have the right mindset. अभी हमें बहुत काम करना है. I remember, this is such a wonderful dialogue, Prashant. अभी हमें बहुत काम करना है. Now sometimes you feel you have done a lot, और कभी ना कभी गैस चढ़ जाती है यहाँ पर कि आप कुछ बन गए हो, आपने बहुत कुछ कर लिया है. I remember Shahrukh Khan's एक story narration है. I don't know if you heard that. And just to share this story from Shahrukh Khan. कुछ साल पहले की बात है, एंड ही वाज बोलते हैं कि स्टार ऑफ स्टार्स एंड थिंग्स लाइक दैट. सो ही सेज वन डे आई वाज इन दिल्ली टू मीट अ फ्रेंड, एंड आई वेंट टू हिज सोसाइटी टू मीट हिम. तो मैं वहां गया तो मुझे वॉचमैन ने रोका. तो ही सेज आई वाज सेल्फ ड्राइविंग एंड आई वाज देयर, एंड तो वॉचमैन ने कहा किससे मिलना है. तो मैंने अपना ग्लास रोल डाउन किया और वॉचमैन को अपना चेहरा दिखाया कि so that he sees me and he understands who am I. तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कुछ नहीं कहेगा. तो he says मैंने अपना चेहरा दिखाया उसको, एंड वॉचमैन फिर भी पूछता है हाँ भाई आपका क्या नाम है. तो वो क्या, शाहरुख says I asked him भाई you don't know me. How would I know you? आप जब नाम नहीं बताओगे मैं कैसे मालूम पड़ेगा आप कौन हो. तो शाहरुख says कि मैं हंसा और मुझे लगा कि यार मैं, लोग बोलते हैं आप सुपरस्टार हो, आप ये हो, फलाना ढिमकाना हो, लेकिन ये वॉचमैन ने मुझे जानता नहीं है, इसका मतलब बहुत काम करना बाकी रह गया है. एंड आई रिमेंबर दैट स्टोरी, नॉट दैट ही इज माय फेवरेट स्टार, बट आई रिमेंबर दैट स्टोरी ऑफ हिज, एंड आई फील दैट कभी भी दिमाग में गैस चढ़ जाए ना, तो कोई ना कोई गैस निकालने वाला रहता है, हवा निकालने वाला आ जाता है, तो बहुत काम करना बाकी रह गया है. सो your passion drives you, only consistent corrective action gives results. Absolutely. I'm in construction sector, but I never thought to see around and search what is going on. बहुत जरूरी है अर्षा. Success follows ideas and innovation. Yes, in future you have to read our success stories. अरे बहुत बढ़िया. I would love to do that, Dana. I want to read. In fact, all of you should. I should be, having a tough time कि मैं किसकी story select करूँ, किसकी story select ना करूँ. That's what I should be struggling with. All success stories have given fuel to complete my goal. They become your fuel. Stories give inspiration. आप भी किसी को inspire करो, अंजलि. I've set my goals and my path to achieve it. Good. गैस निकाल दिया आपने हमारी. कभी भी ऐसा लगे कि बहुत काम कर लिया है. So I feel that it's time to be in a company where somebody would take the air out and bring you back on the ground. तो मुझे क्या कहना है आप लोगों से कि एक तो सक्सेस स्टोरीज में सुनाता हूँ, और जो सुनाता हूँ उसके पीछे एक इंस्पिरेशन का कारण है कि आई वांट यू टू इंस्पायर योरसेल्फ, और आई वांट यू टू गेट इंस्पायर्ड सो यू कैन डू सम थिंग्स व्हिच यू फील ग्रेट अबाउट. नाउ लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग. सी, in Happy Minds, you will never listen from me, or you will very rarely listen from me, a story about somebody who was big, a story about somebody who was arrived in the world space or the national space. Not that उन्होंने अच्छे काम नहीं किए, उन्होंने काम किए, पर उनकी स्टोरी तो पेपर में आ जाती है, उनकी स्टोरी तो टीवी में आ जाती है. कोई पिक्चर हिट होगी तो वो आ जाएगा, कोई टाटा बिरला ने कुछ कर लिया तो वो तो आ ही जाएगा, कुछ बड़े वर्ल्ड स्टेज में एलन मस्क ने कुछ कर दिया तो वो आ जाएगा, ट्विटर में उसने कुछ हंगामा कर दिया तो सबको समझ में आ जाएगा. बट वो हम पढ़ते हैं रोज पेपर में, बट वी सेल्डम गेट इंस्पायर्ड. बड़े, मेरी बात को आप लोग बड़े ध्यान से सुनो इस बात को, कि हम ये सब स्टोरीज पढ़ते हैं पेपर में, बट बहुत कम बार हम इंस्पायर होते हैं. और उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम इंस्पायर क्यों नहीं होते, बिकॉज हमारे मन में वो बात कनेक्ट नहीं होती कि यार हम भी कर सकते हैं. बिकॉज वी थिंक दीज पीपल आर बिग, ये बड़े लोग हैं, इनसे तो ये होना ही था, इनसे तो ये एक्सपेक्टेशन ही थी कि if Tata will not come with something great, then who will?
if Ambanis will not come with something awesome, then who will? So they doing some great work. We feel ये तो उनका काम ही है ना, तो हम उससे इंस्पायर उतने नहीं होते. लेकिन जब हम आम आदमियों की कहानी सुनते हैं, आपकी और मेरी और हम जैसे लोगों की, तो हमें लगता है यार हाँ हम भी कर सकते. That's what I wanted to share with you. ये stories मैं क्यों share करता हूँ? Because somewhere there is an ordinary person behind all these stories. There's an ordinary man, and the stories are of ordinary people. The only difference is that these ordinary people are doing some extraordinary work in their current life. कहीं कुछ हल्का सा extraordinary कर रहे हैं अपने आज के जीने में, which is propelling them, which is taking them to the next orbit. और फिर इनकी स्टोरी सुन के हमें बड़ा मजा आता है. And I'm talking about all those who have met me, all those who have been trained by me, all those who have heard me. तो उनकी स्टोरी से मैं बहुत कनेक्ट करता हूँ, because I knew them when they joined me. किसी को 10 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए, किसी को 2 साल हो गए. I've seen them. जब मैं नीलेश की बात कर रहा था कि वो आयरन मैन करके आया, तो when I was talking to you, तो मेरे मन में उसकी इमेज थी when he met me with his stomach out. And typical entrepreneur, जिसको सिर्फ पैसा कमाना है, जिसको सिर्फ बिजनेस करना है. And then over a period of time, I see him transform कि यार लाइफ भी है, लाइफ भी जी सकते हैं, और वो जी रहा है. And it's so wonderful to see this transformation happening, right? Because वो हमारे सामने के लोग. And तो आपके आजू बाजू, आपके आसपास भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कुछ अच्छा काम कर रहे होंगे. You got to have the eye to see those people. For me, I happen to be the catalyst also for these people, but I also have an eye to see such people. We can compile the book for all these success stories. Absolutely. We feel more connected and inspired to take action today. Absolutely, Rishabh. This is the reason why I share, because somewhere you get connected because of the commonality that we are all common people, we are all ordinary people. This is the commonality. We get connected. And then when you see that, ye inhone kiya, you look into your life and you say, hey, मैं भी कर सकता हूँ. And this feeling and this statement which I'm saying here, इसको पकड़ के रखो, ये मैं भी कर सकता हूँ. अरे मैं भी कर सकता हूँ. ये feeling आना इतना जरूरी है. अरे मैं भी कर सकता हूँ. Because you meet 10 people. Out of 10 people, 9 will say for some task, अरे ये मैं नहीं कर सकता. ये हालत होगी हमारे आसपास के लोगों की, that out of 10, 8 or 9 will say ये मैं नहीं कर सकता. Very rare you will come across people who will say ये मैं कर सकता. I'm taking interviews for the last few weeks, और मैं लोगों से मैं मिल रहा हूँ, and I'm surprised with the kind of people whom I'm meeting. And the majority of them, they're asking questions like, अच्छा आपके उसमें ट्रैवल कितना करना पड़ेगा, अच्छा और वर्किंग आवर्स क्या है. And I'm asking this question, but I have this question in my mind कि why are they not asking questions? सर काम बोलो, क्या काम करना पड़ेगा, बोलो ना, क्या चैलेंज क्या है मुझे बताओ. ये सुनने को नहीं मिल रहा है. बट सुनने को क्या मिल रहा है, अच्छा इसमें ट्रैवल है क्या, इसमें आउट ऑफ सिटी जाना पड़ेगा क्या. तो कहीं ना कहीं वी आर नॉट विलिंग टू गो बियॉन्ड our whatever our limitation is, and as a result we are not developing the language of ये मैं भी कर सकता हूँ. This is such a vital statement. अरे मैं भी कर सकता हूँ, अरे मैं भी कर सकता हूँ. तो कोई भी नया काम आएगा, जो आएगा. What is the first statement on your mouth? What is the first thing which comes out of your mouth? मैं कर सकता हूँ कि मैं नहीं कर सकता. And that makes all the difference to start with. Can you share me the contact of this person? I'll share with you for the sake of, this is such a wonderful Salil and Nitin while my team will put the name of the company. Therefore, all of you do the research, get in touch with these guys and see how we can help them, or you can take help from them, either ways. Anish says, in fact, I'm myself a real success story, keeping in mind of what all I have gone.
you can send us an email, Anish, and we will love to share your story. You can send us email. You can send us on social media. You can send the whole story on the number which my office number is there. आप उसमें भेज दो. We would love to share. We set our visions since the time you taught us in 2008. Best is we are able to achieve the majority of what we decide on the vision board. Just returned from my family vacation for 20 days in Europe. Oh, very good. That's nice, Rishabh. Lovely. तो अपना घर में ही बसा ले यूरोप में. Every year you're found there. So if you're lost somewhere in this world, we'll find you in Europe. Anish, my team has messaged the number there. You can send your success story on this number. And see, if you want to send your success story, we have various channels through which you can send. You can send your success story to us on the numbers which you get your HM link to. You can send us on the mail from where you get the HM link from. You can send us on social media. Go and find me. I'm there on Facebook. I'm there on LinkedIn. I'm there on Insta. वहां पर आप मुझे मैसेज कर दो, मुझे मिल जाएगा. ठीक है? So that's how the communication in today's world. Communication is not a challenge. Finding people's contact details is not a challenge. तो ये सवाल मत पूछा करो, नंबर दे दो, ये दे दो. It's a waste of time. Okay, चलिए. आज का एक बड़ा important subject है. मुझे ना last एक बार चलो I want to share this lovely thing. I was cycling last HM and a lot of you, thank you, love you for all the responses which you all gave me after last week's HM. So those of you who were not there, last week I was cycling from Pune towards Mumbai and it was Rachna's birthday. So we decided that let's celebrate the birthday by cycling from Pune to Mumbai. We could not reach Mumbai. It was very hot and very dry. So we kind of stopped at Kharghar. So we reached Navi Mumbai. So वहां तक हमने किया and we thought of doing it till Gateway of India, but बहुत गर्मी थी and we were tired, exhausted, and we didn't have much of practice behind that entire journey. But nevertheless, we had a great time. So when I last HM, I stopped somewhere on the way to Mumbai and I took HM while on the go in terms of एक side में मैं road में आ गया और वहां से मैंने live HM लिया. So I had my support van with me and वो support van से हम लोगों ने I had my camera and my laptop and things like that. तो वहां से जब cycling continue करी, so somewhere before Lonavala, a car stopped in front. And a person came out from the left side and I didn't know that person and I said ye kaun hai? And the person, the way he came out was to meet me. मैं कहा ये कौन है जो मुझे जानता है, but मैं शक्ल को connect नहीं कर पा रहा था. And then from the driver's side, Santosh comes out and Santosh was there with me last year for my leadership program and he said, sir, मैंने आपको HM में सुना सुबह and I had some work in Lonavala, so I was on my way to Lonavala and मैंने आपको HM में सुना कि आप साइकिलिंग कर रहे हो, तो फिर मैंने कहा रास्ते में तो कहीं ना कहीं मिलोगे आप. मैंने कहा तू काम से नहीं निकला है, तू मुझे चेक करने आया कि मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ. So it was wonderful meeting him. तो मुझे कहाँ का तुम लोग चेक करने आ जाते हो, कहाँ पकड़ लेते हो? I don't know, Santosh is there. हाँ, he's there, Santosh. तो मैंने बोला तू मुझे चेक करने आया कि हाँ सर बोलते हैं कि सर करते भी हैं. It was one. मैं साइकिल में लगा पड़ा हूँ, हाँ फरावान ये आके गाड़ी रोकता है कि सर. It was lovely meeting him and I had a great time. Now, a very beautiful thing which I want to share with you. So, a lot of people they asked me this question last HM ke baad, and messages came and on the social media also messages came. It was wonderful to see your commitment, but how are you able to bring this energy to do all that which you are doing? And I feel that I'm not doing much, but still, if you feel that it's much, I appreciate and I thank you for that. That you acknowledge it. लेकिन मुझे लगता नहीं ये it's a kind of aliveness, and that's what I want you to take back home today. That this aliveness should be there within us, and aliveness comes from a few things which if you make it a part of your life, and I'll share with you from where the aliveness comes from. तो पहले तो ये बताओ कि तुम लोग सुनने को तैयार हो a few things about aliveness. Are you alive right now? तुम जिंदा हो कि नहीं? We have
गजानन, यू आपने कुछ शेयर करना है कि आपने हाथ ऊपर रेस किया है? हाँ, यू इफ यू वांट टू शेयर समथिंग यू कैन शेयर। आपका यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। तो आप लोग जिंदा हो कि नहीं? आर यू अलाइव और नॉट, टू लिसन अबाउट अलाइवनेस? ठीक है, बिल्कुल जिंदा है, आपके साथ जिंदा रहेंगे। आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, आपका खून पिएंगे। हम्म, मैं हूं ना। समटाइम्स एंड पीपल से मैं हूं ना, कहते यही तो प्रॉब्लम है। चलो ठीक, ग्रेट। So I was coming to this point that I got this feedback that people want to understand that, how come this energy levels are there. And I feel that these energy levels are not extraordinary. कोई बहुत खतरनाक चीज नहीं है. It's just a sense of aliveness which we all got to feel. कि हम जिंदा हैं beyond the breathing process. हम जिंदा हैं beyond the physical living process. हम जिंदा हैं, सही माने में हम जिंदा हैं. तो ये एक सेंस ऑफ अलाइवनेस कहाँ से आए ये, और मैं देखता हूँ आसपास की बहुत सारे लोगों के अंदर ये सेंस ऑफ अलाइवनेस कम 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 होते जा रहा है, कुछ में मिसिंग हो गया है। और जब सेंस ऑफ अलाइवनेस कम होता है तो आप देखो कि हमारी बातों में कहीं उसकी एक झलक दिखती है कि यार इनके अलाइवनेस नहीं। तो अगर आप अलाइवनेस का ऑपोजिट पकड़ोगे, सो दैट इज डेथ। सो वन इज अलाइव एंड वन इज डेथ। तो या तो इंसान जिंदा है या इंसान मरा है। तो बहुत से लोगों के जीने के तरीके में डेथ है, बहुत से लोगों के जीने के बात करने के तरीके में डेथ है, बहुत से लोगों के ख्वाबों में डेथ है, आइडियाज में डेथ है, अलाइवनेस नहीं है। एंड दैट्स द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन। द ट्रेजेडी ऑफ आवर लाइफ इज नॉट द अल्टीमेट डेथ। वो तो सबने मरना ही है एक दिन। द ट्रेजेडी ऑफ आवर लाइफ वुड बी दैट while conducting our lives we are dead. That's a tragedy. कि हम मरने से पहले मर गए, इससे बड़ी ट्रेजेडी क्या होगी? And like a living corpse, we are there and we are dragging ourselves through life. वो एक स्टेटमेंट है ना जो सुना होगा आपने कि lot of people they die at 30. It's just that they're buried at 70, 75. उनको दफनाया जाता है 70-80 पे, बट मर तो बहुत पहले गए थे। तो ये मरना नहीं होना चाहिए। There should be a sense of aliveness. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, दिलों में अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो। Absolutely. Is there a disturbance in my voice? Yes, थोड़ा सा echo भी हो रहा है। अभी देखो, I don't know. Yes, better now. Better. Okay. Yeah. I'm talking about aliveness and मेरा mic ही dead हो जा रहा है। चलो ठीक है। So one is you got to have this clarity that aliveness तो जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। और अलाइवनेस के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं मैं आपसे, और वो क्वेश्चंस का आंसर आपने दिया खुद को, उसके आंसर के पीछे आप भागे, यू विल हैव अ सेंस ऑफ अलाइवनेस। सबसे पहला क्वेश्चन, देयर आर 3-4 क्वेश्चंस, कुछ आज पूछूंगा, कुछ आज कहूंगा आपसे, और कुछ नेक्स्ट एचएम में आपसे शेयर करूंगा। एंड द एंटायर कॉन्सेप्ट इज ऑन अ सेंस ऑफ अलाइवनेस। पहला क्वेश्चन आपने खुद से पूछना है, do I have a few nutritious people around me? दोबारा सुनो, do I have a few nutritious people around me? न्यूट्रिशन मतलब ये नहीं खाने में न्यूट्रिशियस होते हैं वो लोग, ये ऐसे होते हैं लोग जो आपके अंदर न्यूट्रिशन लाते हैं, आपके अंदर एक एक वेलबींग लाते हैं। क्या आपके पास ऐसे 2-3 लोग हैं लाइफ में whom you think of as nutritious people? और न्यूट्रिशियस पीपल की ना एक पहचान होती है। अगर आप पूछोगे मेरे से, सर हाउ डू आई नो दिस गाय इज न्यूट्रिशियस और नॉट, ये मेरे लिए न्यूट्रिशियस है कि नहीं, मतलब इसके साथ रह के मेरे अंदर कुछ एनर्जी, कुछ मेरे अंदर पावर आती है, मैं कैसे पता करूं? तो मैं आपको 3 फिल्टर देता हूं। नंबर 1, ये वो एमजी एंड क्रिस्टल फैमिली, मेरी बात सुनो कि पहली बात, ये वो इंसान है
कि जब आप रूम में एंट्री मारते हो और वो रूम के अंदर है, एंड द मोमेंट यू एंटर द रूम, दिस पर्सन्स फेस इट काइंड ऑफ ब्राइटन्स अप। आपको देख के इसका चेहरा खिल जाता है। अगर ऐसा है कि आपको देख के उसका चेहरा खिल जाता है, इसका मतलब दैट पर्सन इज हैविंग द क्वालिटी ऑफ बीइंग अ न्यूट्रिशियस पर्सन फॉर यू। वो क्वालिफाई करता है फॉर बीइंग अ न्यूट्रिशियस पर्सन। अगर आपको देख के उसका चेहरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मतलब इग्नोर कर रहा है, या फिर आपको देख के उसको कुछ भाव नहीं आ रहा है चेहरे पे, तो फिर कहीं ना कहीं वो न्यूट्रिशियस आदमी नहीं है। द पर्सन शुड फील ग्रेट अबाउट यू बीइंग इन द कंपनी। तो पहला फिल्टर है, डज द पर्सन्स फेस ब्राइटन अप व्हेन ही और शी सीज यू। सेकेंड थिंग, उसके पास आपके इंप्रूवमेंट के लिए ज्यादा प्लान्स नहीं है। उसके पास आपके इंप्रूवमेंट के लिए ज्यादा प्लान्स नहीं है। मतलब आप उसके साथ हैं तो वो 24 घंटे में से 48 घंटे वो ये बोलता है तुम इसमें अच्छे बन जाओ, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम इसमें अच्छे नहीं हो, तुम उसमें अच्छे नहीं हो, तुम्हारा ये खराब है, तुम्हारा। Now, this guy is not a nutritious person. He may be a well-wisher. He may be a person who loves you. But आप उसके पास जाते हो तो आपको लोड आ जाता है। आप उसके पास जाते हो तो आप कहते हो अब ये कमी निकालेगा, अब ये कमी ढूंढेगा। Unless until you have hired him for that. या तो आपने उसको हायर किया, आपने उसको पेमेंट दिया, आपने उसको रखा इसीलिए कि भाई यू आर माई कोच और यू आर माई ट्रेनर, यू आर माई सो एंड सो, आप मेरी कमियां निकालो, आप मुझे बताओ मुझे कहाँ अच्छा बनना है, देन इट मेक सेंस। लेकिन वो रिश्ते में है, वो रिश्ते में आपको हर चीज में वो आपके अंदर कमियां ढूंढते बैठता है, then that guy cannot be a nutritious person for you. And the third filter which you got to have is that person listens to you not only from being as a sounding board. होता है ना, हम लोग बहुत बार बोलते हैं I need a sounding board, I need a sounding board, मतलब किसी को हम बोल पाए कुछ। So he is a good listener, but he is beyond, he is more than a good listener. ये क्या करता है, ये साउंडिंग बोर्ड के आगे जाता है, ये आपकी बात सुनता है और ऐसा यू लाइक आपकी बात को लेके वो सुनता है, तो आपको हिट, उसकी आपकी बात उसको हिट करी तो वो पीछे गया, एंड देन इट गिव्स बैक मच मोर देन व्हाट यू गिव टू हिम। तो आपने कुछ बात करी और उसने आपकी उसी बात को वापस आपको दिया और उसका रूप बदल दिया, या उसमें कुछ एड ऑन कर दिया। आपने एक आइडिया दिया तो उसने आपके आइडिया को कुछ और अच्छे ढंग से आपको वापस दे दिया। He is no more a sounding board. He is kind of a extrapolating board कि उसने उस चीज को और अच्छे रूप में आपको और बड़ा करके आपको दे दिया। Your ideas don't get killed in his presence. Your ideas become all the more powerful in his presence. मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। कुछ दिन पहले जब ये साइकिलिंग की बात चली, तो कुछ दिन साइकिलिंग से कुछ दिन पहले we just thought, me and Rachna, we thought चलो साइकिलिंग करते हैं बर्थडे पे। So एक क्रिस्टलियन हमारे हैं, शैलेश जैन। So he's a good cyclist. He keeps on cycling all over the place, all over the city. And husband and wife, they both cycle. And so मैंने शैलेश को फोन किया, मैं कहा शैलेश यार मैं पुणे मुंबई सोच रहा हूँ करने की, you know. And so before I could even say further anything, शैलेश मुझे बोलता है सर मेरी साइकिल ले जाओ ना। And you know, he is into cycling for long, and इसकी साइकिल बहुत अच्छी साइकिल। मैंने उसको बोला भी नहीं कि तू साइकिल बेच, बट he says सर मेरी साइकिल आप ले जाओ, फिर ऐसा करना, फिर ऐसे करना, फिर ऐसे करना। And somewhere one idea which I just wanted to bounce off with him, उसने उस आइडिया को लिया और उसको ऐसे रिबाउंड में ऐसा बड़ा करके भेजा। And he organized the entire thing. उसका टेक्नीशियन उसने लाइन अप किया, उसने कहा सर he's got a firm called Psychologist, उसने अपनी टीम को बोला, तो टीम ने फोन किया, उसने कहा ये सब चीज लगेगी, मेल आ गया, मैसेज आ गया, खट 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 चीजें लाइन अप हो गई। तो कोई ऐसा इंसान जो आपके आसपास है, जो आपके एक आइडिया को ऐसा अच्छे रूप में आपको वापस दे सकता है। There are some people who kill the idea. और हमारे पास होते हैं आइडियाज, लेकिन हम कभी किसी से शेयर करते हैं, once we share it, and somewhere that person knowingly and unknowingly kind of crushes the idea. And there's some people who live the idea. They kind of put life in the idea, and the idea becomes a reality. तो हम सबको ऐसे लोग चाहिए अपने आसपास जो हमें नर्चर करें, जो हमारे आइडिया को नर्चर करें, जो हमारे अंदर न्यूट्रिशन लाए, जो हमारे अंदर की वेलबींग को बरकरार रखें, उसको अच्छा बनाए। And if you have
2-3 such people around you, you will see that your sense of aliveness will always be there in you. अक्सर हमारी aliveness खत्म हो जाती है because we are surrounded by toxic people. We unknowingly are surrounded by people who kind of keep on giving their garbage onto us, और हमारी aliveness खत्म हो जाती है. So सबसे simplest thing which you got to do is ask this question to yourself: do I have a few nutritious people around me? कम से कम 2-3 तो होने चाहिए, right? And when I look in my life, I really feel blessed. I have not 2 or 3, I have many, so many around me. And I think that's one of the reasons why if you find energy in me, the reason is because I have such nutritious souls around me, whether it be at home, whether it be a workplace, whether it be as my friends, whether it be as my students. बड़े अच्छे लोग मेरे आसपास हैं. तो अभी आपके मन में सवाल आएगा मेरे इस सवाल के ऊपर. हाँ जी, चलो मुझे बताओ आपके मन में क्या सवाल आया मेरे इस सवाल पे. He said, I have only one. ठीक है, happy that you have one. Beautiful question, शिल्पा. बहुत बढ़िया सवाल आपके मन में आया. ठीक है, चलो एक सवाल तो ये आया. ठीक है, I shared with you how do you keep your sense of aliveness, or how do you keep yourself alive. तो ये कहां से निकला कि एनर्जी चाहिए होता है कोई भी काम करने के लिए, और कोई भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी इज अ साइन ऑफ अलाइवनेस. तो अलाइवनेस जो है हमारी लाइफ में, नॉट बिकॉज ऑफ द ब्रीदिंग प्रोसेस हैपनिंग, नॉट बिकॉज हम लोग जिंदा है. अलाइवनेस फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ दैट वी आर विलिंग टू डू थिंग्स इन लाइफ. ये कहां से आए? तो मैंने आपको बोला सबसे पहले कि आस्क योरसेल्फ, डू यू हैव 2 or 3 न्यूट्रिशियस पीपल अराउंड यू. तो मेरे इस सवाल से आपके मन में क्या बात है? नाउ आई एम थिंकिंग हाउ न्यूट्रिशियस आई एम. सर काश मेरे आसपास भी अच्छे ही लोग होते. अरे बाबा ठीक है, मैं आऊंगा इस बार, इस पे एक एचएम ले लूंगा मैं पूनम. सर काश मेरे आसपास. नहीं अभी रिग्रेट और काश में नहीं जिएंगे. Yesterday someone dropped my idea instantly as I spoke. एक realization हुआ कि हाँ, this person doesn't qualify as a nutritious person. I realized, how do I become nutritious person for everyone around? बहुत बढ़िया था. Great. I've understood the difference after aligning with MG and family. We have mix of people, both type. Absolutely. हमारे आसपास दोनों तरह के लोग होंगे. कुछ हमारे न्यूट्रिशन हमें देंगे, कुछ हमारा न्यूट्रिशन ले जाएंगे. दोनों तरह के लोग होंगे. Brazilian family is nutritious. Thank you. Immediately have started searching my surrounding. ठीक है. Searching who are nutritious around me. Am I nutritious for someone? Absolutely. Now filtering has to be done. बढ़िया. तो मैंने आपसे कहा कि मेरे इस क्वेश्चन से आपके मन में क्या सवाल आए. तो पहला सवाल आपके मन में आया कि भाई ये है कहाँ हमारे आसपास, लेट मी सी. तो पहला सवाल आपने कहा, भाई है कि नहीं मेरी लाइफ में कोई? तो एक बोलता है मेरी लाइफ में एक ही है सर. कोई बोलता है सर अभी ढूंढना पड़ेगा. कोई बोलता है मेरी लाइफ में नहीं है कोई. राइट? सो अग्रीड, दिस इज वन. सेकंड क्वेश्चन जो आप लोगों ने इसका आपने लिखा कि हाउ डू आई बिकम न्यूट्रिशियस फॉर समबडी. इट इज सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन व्हिच यू हैव इन योर माइंड. इमेजिन करो कि आप सुबह आपके मन में सवाल आता है, ये हाउ डू आई बिकम न्यूट्रिशियस फॉर समबडी. तो क्यों नहीं वो दिन अच्छा जाएगा? क्यों नहीं किसी की जिंदगी में कुछ अच्छा असर आएगा? Because we have this wonderful question, how do I become nutritious for someone? Now, मेरे पास एक और सवाल है जो आपके मन में आना चाहिए. आया होगा, शायद आप लिखने से चूक गए, टाइम नहीं रहा आपके पास. एक और सवाल आना चाहिए आपके मन में. When I said, do I have nutritious people around me? तो आपने कहा हाँ है, और आपके मन में आपने देखा तो आपके पास आसपास 1 या 2 लोग आ गए. कुछ लोग ब्लेस्ड हैं, उनके पास बहुत सारे होंगे, लेकिन 1-2 लोग तो होंगे किसी न किसी के पास. तो आपके मन में सवाल आना चाहिए, हाउ डू आई कीप दीज पीपल विद मी फॉर लॉन्ग? हाउ डू आई रिटेन दीज पीपल विद मी फॉर लॉन्ग? मैं इनको संभाल के कैसे रखूं? बिकॉज ये मेरे न्यूट्रिशन के सोर्स हैं, और इनको मैं फॉर ग्रांटेड ले सकता हूं, या मैं इनको फॉर ग्रांटेड ले रहा हूं.
So how do I hold on to these people? It's a very powerful question. And we don't need many nutritious people. बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन हो जाएगा तब भी गड़बड़ हो जाती है. We just need a few. लेकिन ये जो होते हैं हमारी लाइफ में, ये हमें छोड़ देते हैं या हम इनसे दूर हो जाते हैं बिकॉज हमने कभी इनकी वैल्यू नहीं करी. तो मेरा आज आपसे रिक्वेस्ट है इस एचएम के माध्यम से, that first find those few nutritious people around you. That's number one. Number two, उन न्यूट्रिशियस लोगों को संभाल के रखो यार, because they are doing to you something which you can't even imagine. They're keeping you alive, and that aliveness of yours will make you do things which you have not even thought were possible for you. This aliveness in you will make you live life. This aliveness in you will make you get the best from life. But this aliveness has a source, not the only source. One of the sources of aliveness is these nutritious people around. उस सोर्स को संभाल के रखो, उसको संजो के रखो, उसको प्रिजर्व करो, उसको नर्चरिंग करो, so that you become a nutritious person for that soul. Then it becomes एक कुछ कि आप उनके लिए न्यूट्रिशियस हैं, वो आपके लिए न्यूट्रिशियस हैं, and it becomes a great ecosystem. An ecosystem survives because both are contributory. An ecosystem does not survive when one is a consumer and one is a contributor. It's only when both are consumers and both are contributors. हाँ जी, तो आइडेंटिफाई, सिंपल बातें हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो मैं आपसे बातें कर रहा हूं. सिंपल, yet simple things are overlooked because हमें कोई बहुत भयंकर कोई तंत्र मंत्र चाहिए जिससे जिंदगी अच्छी हो जाए. ये सिंपल मंत्र है. Find two souls around you who are the source of nutrition for you. Take care of them so that you keep on getting the nutrition. Selfish है, लेकिन वो selfishness में किसी का भला हो रहा है. Let's take care of them. Let's find them. Let's preserve them. Hold them. And then the second step to it. इतना nutrition आ गया, हम अच्छे हो गए, हम alive हो गए. Can we also make a few people alive around us? And if that happens, you will be a source of inspiration. Some people become the source of expiration. कि उनके आने से कुछ लोगों के करने की हिम्मत, नियत, काबिलियत खत्म हो जाती. And there are some people who are sources of inspiration, जिनके आने से लोगों की हिम्मत, नियत, काबिलियत बढ़ जाती. The question is, who will you be? आप क्या होगे? Will you be a source of aliveness for somebody? Or will you be a source of expiration for somebody? And we can play both. Just like somebody said, हमारे आसपास दोनों तरह के लोग हैं. People who are like death, and there are people who are like life for us. People who kill an idea of ours, people who kind of give life to an idea of ours. People who kill our inspiration around us, and people who kind of lift our inspiration for us. People who kind of make us feel that we are nothing, and there are people who make us feel that we are everything. ऐसे आसपास दोनों लोग हैं हमारे. हमने उन दोनों में से उनको चुनना है कि कौन है जो हमारे अंदर लाइफ दे रहे हैं, और उनको संभाल के रखना है. और दूसरा काम, one step ahead, and we become that source for somebody else. मेरा विश्वास करो, छोटी सी बात है, लेकिन तुमने इसको अगर समझा और जिया, you will see that you will have a very strong sense of aliveness. Very strong sense of aliveness. I was talking in one of the organizations a few days back, and I said, and I was talking to the entrepreneur, और अगर यहाँ मेरे कोई entrepreneur मुझे सुन रहे हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो उसका एक there is something which he comes ready with from the parent side. So उसका genetic makeup, उसका एक अंदरूनी जो है वो part जो है, it comes from the parents. Now the way he look, the way he is, the skin color and things like that, उसका एक genetic makeup he brings. फिर जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, he gets loaded with the
the societal उस पे जो भी bombardment होता है from a society, and he becomes whatever the society of that time or whatever was prevalent in the society at that time, he picks it up from there. And then there's a third impact on our personality. So one is from what we get from the parents and teachers and things like that. Second is from society where we are living in. The third bombardment which happens, or the third area of impact in our lives, is the workplace where we are. जिस जगह पे हम काम करते हैं, because we work for years. वो 20 साल के बाद से लेके 50-60 साल तक, वो 40 साल का हमारा जो काम का सफर होता है ना, that has huge impact on us. And I was telling the entrepreneur कि आपके पास एक काबिलियत है, आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जहां पर उस कोई इंसान जो आपके यहाँ काम कर रहा है, उसके अंदर का हिडन टैलेंट, जो उसका कोर है, उस कोर को बाहर निकालने की पॉसिबिलिटी आपकी ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है. सो दिस इज द थर्ड इम्पैक्ट. सो इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस कि न्यूट्रिशियस आदमी आपके आसपास जो है ना, वो इतनी काबिलियत रखता है कि आपके अंदर का कुछ कोर जो आपके अंदर हिडन है, जो आपको भी नहीं मालूम आपके अंदर है, वो बाहर निकालने की ताकत रखता है. ऐसे न्यूट्रिशियस इंसान को संभाल के रखो. दैट पर्सन कैन बी इन योर वर्क प्लेस, दैट पर्सन कैन बी इन योर फ्रेंड सर्कल, दैट पर्सन कैन बी इन योर फैमिली. आइडेंटिफाई दैट सोर्स. अक्सर हम अपने ही जिंदगी जीने में इतने मशगूल होते हैं कि हमें वो समझता नहीं. Is it connecting? So पूनम, तुमने कहा कि मेरे आसपास बहुत लोग हैं जो they kind of take away life from you. नहीं, ऐसे एक दो तो होंगे जो आपके अंदर aliveness भी लाते हो. So see if you can hold on to them. And second is if you can nurture them back also. Did it make sense? तो मैंने चालू कहां से करी बात? मैंने बात चालू करी from this very perspective that to do something big in life or to do something beautiful in life, big छोड़ो, अच्छा करने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए. एनर्जी कहां से आती है? एनर्जी comes from a sense of aliveness. Aliveness क्या होता है? is somewhere where you are not just physically alive, but अंदर से आपके अंदर उमंगे हैं, एस्पिरेशंस हैं, आपके अंदर एक जान है. और अक्सर वो सोर्स जो है वो उस अलाइवनेस का, इट कैन कम फ्रॉम पीपल अराउंड अस. सो उनको मैंने नाम दिया न्यूट्रिशियस पीपल. सो सर प्रे फॉर मी, आई मस्ट गेट दोस. आई विश कहीं बाजार में मिल रहे होते पूनम ये लोग, तो हम इनको ले आते. We got to deserve these nutritious people, and that was my second point for the day. We got to deserve these nutritious people. आप कौन हो? आपके पास क्यों आएंगे? उनकी मजबूरी नहीं होनी चाहिए ना कि आपको न्यूट्रिशन दे. You should be somebody. If you are a flower in the garden, so you should be a flower which the gardener should feel it's worth giving nutrition to. तो उसको लगना चाहिए यार, इसको न्यूट्रिशन दिया ना तो ये खिलेगा, ये बहुत बढ़िया खिलेगा, बहुत अच्छी सुगंध देगा, बहुत बढ़िया रंग देगा, बहुत बढ़िया खुशबू देगा, बहुत बढ़िया बगीचे को एक फील देगा. तभी तो गार्डनर आप पे मेहनत करके आप पे डालता है न्यूट्रिशन. So you got to deserve somebody's nutrition. You got to deserve somebody's time. तो वो बनने की चाहत रखो अपने. Rather than I should get, no, I will become to get those nutritious people around. हमें भी तो कुछ बनना पड़ेगा. तो उसके लिए एक चीज करो. You will see that in all the people relationship side, there's one thing which I've observed the last 25 years. और वो क्या चीज है कि people love to go to people who are kind of smiling, they are laughing, they are lighter in their life. तो जो लोग ज्यादा हंसते हैं, जो लोग लाइट होते हैं, उनके पास लोग अट्रैक्ट ज्यादा होते हैं. ऐसे मैंने ऑब्जर्व किया. तो second question for you for being alive today is, do you have a belly laugh
once or twice or 5 times or 10 times in a day? Do you have a belly life? Belly life मतलब कि पेट से आप हंस रहे हो. You have a laughter which is coming from here, not from here or not from here. आपका belly laughter होता है, आप हंसते हो, पूरी बॉडी ऐसे हंसती है. Do you have that laughter in you? कि वो laughter छूट गया तुम्हारा, अभी तुम ऐसे कुंजुम कुंजुम हंसते हो. Second question you got to ask yourself is, do I have a belly laughter? Once or twice or thrice or 10 times in a day. And belly laughter is, जब आप अंदर से हंसते हो, it's kind of an internal jogging. आपके internal organs jog कर रहे होते हैं when you're laughing. तो बहुत से लोगों का ना हंसना ही बंद हो गया है. बहुत से लोगों का हंसना जो है जोक्स पे डिपेंड करता है, और जोक्स सुनाने वाले हैं लोग उनके आसपास, and they've kind of become a recluse. तो ये पूछो अपने आप से, that do I have a belly laughter? And if you have a belly laughter, you will see that you will be attracting people towards you. Somewhere, these nutritious people would want to be with you. I'm not saying this is the only reason why they will be with you. But मैंने कभी मायूस, थके हुए, हारे हुए, चेहरे से एकदम निपटे हुए, निपटे हुए मतलब जिनके चेहरे को देख के लगता है ये तो मैयत छाई हुई है, ऐसे लोगों के पास मैंने बहुत कम लोगों को आते हुए देखा. लेकिन जिसका चेहरे पे मुस्कुराहट है, जिसके आसपास लाफ्टर की गूंज है, उसके पास मैंने ज्यादातर लोगों को जाते हुए देखा है. So, see if you have a belly laughter, तो हंसना सीखो यार. belly laughter, मतलब ऐसा ना जो बोलते हैं ना कि हंस के, आपके हंसने से दो लोग और हंस जाएं, ऐसी हंसी अगर आपके अंदर है तो इट इज अ साइन ऑफ अलाइवनेस कि आप जिंदा हो, कि आप जिंदा हो. Yep. You can add. Happy Men's Day to everyone. So I've just shared with you this. Today's Men's Day or what? I don't know. क्या कहना चाह रही हूँ. So have you been able to connect with? So what's your takeaway from today's app, Happy Minds? What's your takeaway from today's Happy Minds? What's your takeaway? Real meaning of aliveness. Try to preserve nutritious people around you. We should deserve to get those people. Absolutely. Stay alive. Find nutritious people. Great, wonderful. Stay alive to get nutritious people around. Uske kabil bano. Absolutely. And you will see that the world around you is a lot better than what you think it is. Those two souls have the power to change your world, to change your perception towards the world. It has the power to also give you that kick that you can become and you should become a nutritious person for somebody. ये एक ताकत और ये पावर है हम सबके अंदर. तो this week, find those nutritious people, and this week, see if you can become nutritious for somebody. It's going to be a nutritious week for everybody. And look forward to the Happy Minds, Mega Happy Minds. Look forward to 8th of January. आपको अगर आना है तो do registrations fast because it's a hall. We cannot have unlimited people there. And we're launching it from today that it's there. So be there and let's create energy. Let's be nutritious to each other. Let's be there in the hall to create more energy. And I'm sure it will be a great start for 2023. ऐसा मुझे लगता है. So thank you for being there for today's HM. Next week, I'll share with you 4 more questions on how to stay alive, or questions which will give you some kind of a
There'll be introspective questions. They will take you deeper into your own life, and they will make you ask this question to yourself: why the hell am I not alive? Or how can I be more alive? They'll put you on both the sides. So wait for next week's HM. Look forward to that wonderful time. And love you for being there today. And I'll see you physically maybe on 8th of January. And some of you I'll see tomorrow. Thank you, Mansoor.